Hello students, good morning. Myself Sasi Rai from Green Valley English School. In class 11th history, today we have to start a new chapter, that is changing cultural tradition. In this chapter, we will particularly talk about the after the Dark Ages, means after the fall of Roman Empire, what were the changes the society faced, what are the political changes, what are the social changes. We will look after that. In this chapter we will see the very first thing which is center of this chapter. The word which is center of this chapter is Renaissance, which is also some people call Renaissance, but the real pronunciation of this word is Renaissance. The phenomenon that marked the changes of cultural tradition in Europe is Renaissance. This is the nucleus, you can say, this is the axis, this is the center of the whole chapter. The whole chapter around this particular word. So first of all, we have to understand what is Renaissance, the meaning of Renaissance. Renaissance means rebirth or revival of the ancient Greek and Latin culture. Why people were asking or demanding for the revival of ancient Greek and Latin culture? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि इनके अकॉर्डिंग जो हमारा पास्ट था वो ज़्यादा ग्लोरियस था इन कंपेयर टू द प्रेजेंट लाइफ स्टाइल, द प्रेजेंट लाइफ दे वर हैविंग. सो दे वर ट्राइंग टू हैव they were trying to bring or revive the past, and the past, the culture which was prevalent in that particular area, that was the ancient Greek and Latin culture. So the Renaissance means rebirth of what? Revival of what? Ancient Greek and Latin culture. They were demanding, the people were trying to represent the ancient Greek and Latin culture. What were the causes? Why they need to have this? The very first one is the contact of the East to West. Now the East Roman Empire and the West Roman Empire, though both of them connected, now they have contacted, as well as they contact the Far East with the Far West. Means before that people believed that the Europe fall in the West, and in the East whatever things they were not connected at like in a modern way, in a right now term. Second thing, the second cause was rise of new middle class. The new middle class emerged in Europe in the later Roman Empire. Third is downfall of feudalism. What is feudalism? You know feudalism? Please answer in the chat box, in the comment section. What was the feudalism? In that particular period of time, there we can see there was downfall of feudalism. Now feudalism was totally abolished in the Europe. So it was the cause of Renaissance. Next thing is rise of national states. Now the things have rise, the national states have rise on the graph of there. So these are the basic causes. And next thing is the rise of new towns and trade. Now as the urban culture is evolving, now the cities, the towns were evolving. That's why the rise of new towns and trade evolved. Now new towns and trade capitals have emerged all of a sudden on the map. How the contact of East and West? First of all, fall of Constantinople to the Ottoman Turks. Constantinople, right now आपने तुर्की का नाम सुना होगा. वहाँ पे एक चर्च थी कॉन्स्टेंटिनोपल. उस चर्च के ऊपर ओटोमन तुर्क्स ने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया. और राइट नाउ ये जो सिचुएशन ये है कि जो वहाँ पे चर्च थी उसको कन्वर्ट करके एक मॉस्क बना दिया गया. जो पहले एक चर्च था, राइट नाउ इट इज अ मस्जिद, मॉस्क. सेकेंड थिंग इज क्रूसेड्स. यू नो क्रूसेड, वी टॉक अबाउट द क्रूसेड इन द सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड व्हेन डिफरेंट पीपल war was happening. The war which was religious in nature, means एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के ऊपर जब हमला करते थे, that was called crusades. Especially this was happening with the Christian people, the Christianity versus Islam. This was going on at that particular of time. Means the Islam was fighting with the Christians, in the same way the Christians were fighting with the Islamic people, the Islamic kingdom. These were the region of the causes of Renaissance. Now we will talk about the effects. What were the outcomes of this Renaissance? Right now we are discussing through this chart because it will be easy to understand when I will show you the textbook in the next video. Then you will be able to understand what is Renaissance, what is the meaning of Renaissance, what were the causes, then what were the effects. Effects means outcome, result of that Renaissance. The very first effect was
the beginning of modern age. There was beginning of modern age, and second thing was Reformation movement. Reformation, people somehow treat that Reformation is different thing, but it is, you can say, birth of Renaissance. It gives the path to Reformation. First of all, we will talk about the beginning of modern age, how it became modern. The very first thing they discussed was humanism, then rationalism, and the third one is the scientific viewpoint. Means अब society में change होने लगे. Human become the center of all activities. Now society was, before that society was treated as whole. Now individual की बात यहाँ पे humanism में आने लगी कि each and every person is different and unique. Each and every individual is different and unique. That's why we should treat each one with courtesy and respect. हमें एक दूसरे के आदर करना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए. सेकेंड वाज रैशनलिज्म. रैशनलिज्म एज यू ऑलरेडी नो तार्किक होने सोसाइटी लगी. सोसाइटी अब वहाँ पे क्या करने लगी, हर चीज़ में तर्क लगाने लगी. ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड, व्हाई हैपेंड एंड वेयर हैपेंड. दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड देयर. ये हुआ तो कैसे हुआ, होता है तो क्यों होता है और कब होगा. और इसीलिए धर्म को यहाँ पे कहीं ना कहीं रैशनैलिटी ने सुपरसीड कर दिया धर्म के ऊपर. नाउ इट ओवरलैप्स ओवर द रिलीजन. जो कुछ भी चर्च पोप कहते थे लोगों ने उसको मानने से मना कर दिया. नाउ पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द पोप एज वेल एज द चर्च. लोग चर्च से पोप से क्वेश्चन पूछने लगे कि आप कह रहे हो कि यू आर द शैडो ऑफ गॉड, प्रूव इट. हाउ यू आर द शैडो ऑफ गॉड. आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपने आप को क्लेम करते हो. यू पीपल आर क्लेमिंग दैट यू आर द शैडो ऑफ गॉड, काइंडली प्रूव इट. सो दैट्स वाई इट वॉज रीबर्थ. लोगों का पुनर्जन्म हो गया, पूरी सोसाइटी का पुनर्जन्म होने लगा. द थर्ड थिंग इज साइंटिफिक व्यू पॉइंट. नाउ पीपल हैव डेवलप्ड द व्यू पॉइंट ऑफ साइंस एंड लॉजिक. अब लोग हर चीज़ को लॉजिक और साइंस के साथ देखने लगे. नाउ वी विल रीड अबाउट द ह्यूमनिज्म. इन ह्यूमनिज्म वी हैव ह्यूमनिस्टिक आर्ट, and the second thing is humanistic literature, humanities as a stream. Right now you people are reading, you people are in the section of humanities, class 11th. So this stream come to in context in that particular period of time from Europe. तो इसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों का ही हाथ है जब आप आज ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो. इसमें क्या चीज़ें सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए, द सब्जेक्ट्स लाइक व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री. दीज सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और इसमें इंसानों के बारे में, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में रीड किया जाने लगा कि कैसे हम सोसाइटी को इवॉल्व कर सके. ऑल दीज थिंग्स वर इंक्लूडेड इन ह्यूमनिज्म. द वेरी नेक्स्ट थिंग इज रैशनलिज्म. इसमें क्या हुआ, रैशनल लेवल पे रैशनल लिटरेचर आने लगे, रैशनल आर्ट आने लगे. जो भी आर्ट था, जो भी लिटरेचर था, all these things were included as rational basis. सबको rational basis पे बनाया जाने लगा, whether it is art or whether it is literature. The next thing is scientific viewpoint, development of science. You can see in this phase we can see there was development of science. First of all, Copernicus, Kepler, Newton, Galileo, Harvey, Academy of Science. These people, all these people belong to this particular period of Renaissance. इन्होंने बहुत सी इनोवेशन डिस्कवरीज की, whether it is in the field of physics, chemistry, science, astronomy, astrology, whatever the things, जो कुछ भी साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था, this happened in this particular period of time. That's why this also contributed. और इसके पीछे होने का कारण ये इफेक्ट है, क्योंकि रिनासा नहीं होता तो ये लोग अपना एक रैशनल माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाते, एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट नहीं अपना बना पाते. नाउ द सेकेंड थिंग इज रिफॉर्मेशन मूवमेंट. इसमें मीनिंग कॉजेज रिजल्ट्स हैं, ऑटोक्रेसी ऑफ द चर्च है, और प्रोटेस्ट मूवमेंट बाय मार्टिन लूथर किंग है. मार्टिन लूथर है, एक मार्टिन लूथर किंग थे, वो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था अमेरिका में. ही वॉज मार्टिन लूथर. इन्होंने एक बुक भी लिखी है. वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, बट राइट नाउ आई थिंक यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ रिनासा. So guys, this was the introductory part of this chapter, changing cultural tradition, in theme 7. In the next video I will discuss the further topic in detail. Thank you so much. Thank you.